Joining the debate with Shehzad Poonawala, Anand Ranganathan are Sanjay Jha and Vivek Silas. But Sanjay Jha, my question to you is, Bhupen Bora also gone. How many more will you lose before you realize that there is a credibility crisis of the leadership in your party? Well, I'll be very frank with you. Losing a well-established leader who was very close, I think, to the leadership even in Delhi is a disappointment. I don't think anybody should whittle the importance of that exit. But the point I wish to make is slightly different, that the BJP is obsessed with Rahul Gandhi. I mean, I was even hearing in the previous program on AI. I mean, it's as if the government wants to blame Rahul Gandhi for the failed AI summit or whatever fiascos happened. I mean, this obsession is telling me that Rahul Gandhi is probably beginning to set the narrative. He's setting the agenda. And normally in good, clean politics, if it's a fair, level playing field, the one who sets the agenda has a head start. So I think the BJP is probably rattled with its own internal problems. Well, I'm not going to deny that Congress has its homework to do. I'm not going to deny that. I'm not going to run away from that question. But the BJP is far from confident in every state other than Assam, which is why I want to repeat what I said on your program earlier, Navika. The Congress should focus on winning Assam. If they win Assam, the political narrative of this country... Well, but that is where you've lost the plot and you've lost your own stalwart of 30 years, my friend, because Rahul Gandhi cannot solve the problems. And Anand Ranganathan, I just want to play out for you what Yogi Adityanath told me yesterday when I interviewed him. And आप भी सुन लीजिएगा क्या बोला. पहले ही कह दिया था ना कि राहुल गांधी को देश गंभीरता से नहीं लेता है और फिर होता ही है कि जब कोई जहाज डूबता है तो उसमें कौन कैप्टन बनेगा, तो कैप्टन भी वही व्यक्ति होगा जो उसको आसानी से डुबोने में सहायता कर दे. तो राहुल जी तो उसको उस जहाज के कैप्टन बन चुके हैं जो आसानी से उसको डुबो सकते हैं. कांग्रेस अपने अंतिम दिन गिन रही है. देखिए, अर्थी पे कंधा देने के लिए कम से कम 4 लोगों की आवश्यकता पड़ती है. कांग्रेस के पास वह 4 लोग भी जीत के नहीं आए हैं यूपी के सदन में. आनंद रंगनाथन, 4 लोग भी नहीं आए यूपी में. वहां कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो भाग गए हैं आसाम में और ये कह रहे हैं कि मोदी राहुल गांधी से डर रहे हैं. You should count how many members of parliament are there from Uttar Pradesh. Last I heard, I was Anand Ranganathan, not you, even though you would love to be Anand Ranganathan. Please allow me, it's my turn. Thank you. Navika, I've always said so sure that if Rahul was the captain of Titanic, he would have sailed the ship all night long in search of icebergs to collide with. But here, this is one of those peculiar debates, please bear with me, where both Yogi ji and Sanjay ji are absolutely right, and I explain how. It might seem impossible, but it is true. What Sanjay has said, that BJP is wary of winning. Now, this time round, the BJP may not be wary of winning Assam, but going forward, looking ahead 5 to 10 years, it would be almost impossible for BJP to win. And Yogi has said that Congress is never going to win. He is right, because going forward, the demography of Assam will make sure that BJP can never win. And the demography of Assam will make sure that Congress will never get the Muslim vote. It will be the Islamist. 10 years ago, 14 years ago, the 2011 census had put the Assam minority Muslim population at 30%. Today, by all accounts, it is 40% of 35 million. It is going to be moving forward impossible for that chunk of community to vote for the BJP. So writing is on the wall. But when the population increases, the first people they will junk out will be the Congress. So Islamists are going to come back. They're just biding that. Well, that is a debate for another day. But Vivek Silas जी, वो योगी जी कह रहे थे कि 4 लोग चाहिए होते हैं कंधा देने के लिए. कांग्रेस के पास उतने नहीं है. सपा का भी यही हाल होने वाला है. जरा नहीं, सपा क्या हाल होगा वो तो 2024 के चुनाव में हमने देख ही लिया क्या हाल हुआ भारतीय जनता पार्टी का और क्या हाल हुआ समाजवादी पार्टी का. वो सबने देखा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. देखिए, मैंने पूरा इंटरव्यू देखा नाविका जी आपका. अभी हम आपने जो योगी जी का इंटरव्यू लिया वही मतलब जो आपने योगी जी का इंटरव्यू लिया था, तो उसमें अभी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे. जब मणिकर्णिका घाट पे
अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, उसमें एक शिवलिंग भी था, तो योगी जी ने कहा वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आई है। ये सवाल तो हुआ ही नहीं। योगी जी ने गोरखपुर में अभी भी कहा है कि दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर है, वहां लोगों का जीना दूभर है। सीधे भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय और दिल्ली की सरकार पे उन्होंने सवाल उठा दिए। आपको ये भी पूछना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में 30,000 स्कूल कैसे बंद हो गए। कोडिंग सिरप पी के छोटे छोटे मासूम बच्चे मर गए। 2,000 करोड़ का घोटाला हो गया। डिबेट है राहुल गांधी जो को छोड़ के जो सब लोग जा रहे हैं, आप उन्हें नेता मानते हैं? इंडिया अलायंस शुड राहुल गांधी लीड द इंडिया अलायंस? योगी जी ने आपके द्वारा इंटरव्यू लिए गए में बोला कि 9 साल बाद भी सरकार के वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को हम पुराना सम्मान दिलाना चाह रहे हैं। तो 9 साल से क्या कर रहे थे? कौन सा सम्मान दिला पाए? आज उन्हीं के विधायक, उन्हीं के मंत्री को बंधक बना रहे हैं। पानी की टंकियां फट जा रही हैं भ्रष्टाचार में, बाल बटुकों की शिखा खींच के लोग मार दे रहे हैं। उसपे कोई सवाल नहीं होगा। शहजाद पूनावाला, they can't solve their own problems. Nobody wants to see Rahul Gandhi as the leader. What is happening in Assam? Well, they've had to issue a diktat in Tamil Nadu that nobody will say anything against the DMK. Just what's going on to Rahul Gandhi's leadership? Firstly, Navika, I have a small request of you. Just like Bhupen Bora was the last Hindu of Assam Congress, Sanjay Jha is the last intelligent Congress spokesperson left. तो इसको हर कीमत में बचा के रखना है टेलीविजन पे. We have to protect him with all our might. Because Navika ji, look at Mr. Vivek Silas. Here they will come and they will do Rahul and वहां पे यूपी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को चोरी करके ले जाएंगे. आज उद्धव सेना, प्लीज सर, I don't interrupt. दुनिया भर के सारे भ्रष्टाचारियों को I'm short of time on this debate, Vivek Silas. Don't interrupt. I'm lowering your fader, Shehzad. Complete your point. Actually, I'm having a very bad audio, so I can't hear when you're interrupting. Secondly, Navika, it is not BJP who's obsessing over Rahul Gandhi. Sanjay Jha lives in Mumbai. He is alliance partner of UBT. UBT का पेपर है सामना, और आज सामना में एडिटोरियल छपा है that Rahul is useless and incompetent. Get Stalin or get Mamata Banerjee to lead the alliance. Yesterday, Sagarika Ghosh had said, Rahul को हटाओ, TMC को लाओ. Just now, before the debate started, VCK, an ally of the Congress and DMK, has said that Rahul cannot lead the India alliance. Stalin should be leading the India alliance. समाजवादी पार्टी के IP सिंह और रामगोपाल यादव ये रोज बात करते हैं. RJD के नेता यही बोलते हैं. अरे तो राहुल हटाओ, इंडिया अलायंस बचाओ, ये तो राहुल गांधी के साथ ही बोलते हैं. ना जनमत है, चुनाव हारते हैं, ना संगत है, और अब तो मणिशंकर अय्यर मतलब जनपद भी नहीं है. इनके पास जनपद भी नहीं बचा. Ladies and gentlemen, election time, and when big leaders leave the Congress party, of course, the question will be, is there a leadership crisis? Is there a credibility crisis within the Congress party? That's the question people are asking. Thank you very much to all my panelists, and thank you viewers for joining me on the News Hour tonight.